Hello guys, this is Sanjay Rathi. Welcome to the Byju's exam prep. Now we are going to start our journey from incandescent lamp to LED, that is light emitting diodes guys. Now these days we are using LED bulbs. Then what are the advantages of this bulb and what about the functions? Everything we will discuss in this session. Now this is my introduction. Now first of all watch this, right? यहाँ फायर से स्टार्ट होकर मोमबत्ती के साथ ये हमने बल्ब लाया, देन व्हाट CFL एंड एवरीथिंग इज नाउ रिप्लेस्ड बाय LED. तो चलिए मेरे साथ देखते हैं कौन कौन से प्रैक्टिकल बल्ब हमारे पास अवेलेबल है. Hello guys, we have different types of LEDs here. Now watch this. This is a 9 watt LED bulb. Then it is a 50 watt LED bulb for indoor unit, and this is a 50 watt LED bulb for outdoor, right? यहाँ पर आपको ना बहुत सारी LEDs दिखाई दे रही होंगी जो सीरीज में कनेक्टेड है, राइट? जिससे हम इसको वोल्टेज इंक्रीज कर रहे हैं. अब यहाँ आप देखिए टेबल लैंप है. अगेन यहाँ पर भी हमने LED का यूज किया हुआ है. ये देखिए इससे हमने ये ऑन किया और हम इसकी ब्राइटनेस को भी कंट्रोल कर सकते हैं, राइट? ये हमने इसकी ब्राइटनेस को कंट्रोल कर लिया. Similarly, we can control the color of LEDs these days. Now, initially we were using this lamp. ये आपने बहुत देखा होगा. अब देखो इसके कंपैरिजन में बड़ा ही तरीके से इसे संभालना होता है. ये ग्लास का बना हुआ है और ये ब्रेकेबल ग्लास है और इसके अंदर का जो फिलामेंट है, ज़्यादा आप इसे वाइब्रेट करेंगे ना तो ये ब्रेक हो जाएगा. अब जब हम बात करते हैं लाइट का कलर भी देखिए, इसका जो कलर आता है वो है येलो कलर. ओके. नाउ अब आप ये LED देखिए जरा. ये है LED, ये नॉन ब्रेकेबल ग्लास है, राइट? आप इसे वाइब्रेट करते हैं तो भी इसका कोई फिलामेंट टूटने के चांसेस नहीं है. मतलब ये इसके एडवांटेजेस हो गए. दूसरा इसका एडवांटेजेस है जो मेन है, इसकी एफिशिएंसी इसके कंपैरिजन में ज़्यादा है. इसकी लाइफ जो है बहुत ज़्यादा है. ये 1 लाख आवर्स तक काम कर सकता है. मतलब अगर आप इसे रेटेड वोल्टेज पर चलाएंगे तो ये 10 ईयर्स तक सर्विस दे सकता है. ओके. अब देखते हैं ज़रा. ये देखिए यहाँ इसका जो कलर है ये देखिए व्हाइट कलर में, राइट? और वैसे भी हम डिफरेंट कलर की LEDs भी बना सकते हैं. नाउ अब इन LEDs में दो चीजें हैं, ठीक है? ये LED लगा हुआ है, इसने इसको रिप्लेस कर दिया. ऐसा क्या रिवॉल्यूशनरी स्टेप हुआ कि इसने इसको रिप्लेस कर दिया? तो पहले जो LED के ड्राइवर्स थे वो एक्सटर्नली फिट होते थे, राइट? जहां बड़े बड़े LED पैनल्स लगते हैं वहां पर हम लोग एक्सटर्नल ड्राइवर लगाते हैं. लेकिन यहां पर इसके अंदर आपने एक इंटरनल ड्राइवर लगाया है ताकि आप यूजर इसको इजीली यूज कर सके. इज इट क्लियर? तो यहां पर है, जब मैं इसे ओपन करता हूं, देखिए आप यहां से इसे ओपन कर सकते हैं, राइट? जब आपने इसे ओपन किया तो ये आपको ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा. ये देखिएगा जरा पास में. अब ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है इसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, राइट? इससे बोला जाता है LED ड्राइवर. Here we are using what? One capacitor. Then what here? Watch this. This is a rectifier, that is called bridge rectifier, जो कि फुल वेव रेक्टिफायर है. फिर अगेन हमने एक कैपेसिटर फिल्टर लगाया है, साथ में सीरीज में एक इंडक्टर लगाया, दैट इज अ ड्रम इंडक्टर. एंड हियर अगेन वी आर यूजिंग द कैपेसिटर. देन दिस इज अ ट्रांसफॉर्मर बट एक्चुअली इट इज अ इंडक्टर गाइस. इट इज अ कॉइल. नाउ हियर वी आर हैविंग द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स. तो दिस इज कॉल्ड व्हाट? LED ड्राइवर. किसी सर्किट में आपका बक एंड बूस्ट कन्वर्टर भी लगा हुआ है जिससे हम वोल्टेज को स्टेप डाउन करते हैं. अब याद रखिए जो ये LED है इसके लिए हमें डायरेक्ट करंट चाहिए और जो वोल्टेज चाहिए ना वो भी कम वोल्टेज चाहिए. लेकिन जो आपका जो वोल्टेज आ रहा है लाइन पर वो है 230 वोल्ट RMS वैल्यू और साथ में वो AC है. तो हम पहले इस AC को DC में कन्वर्ट करते हैं, राइट? और फिर उसे हम स्टेप डाउन भी करते हैं. स्टेप डाउन जो DC में होता है उसके लिए हम अलग सर्किट यूज करते हैं. इन सब सर्किट के बारे में हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे. तो अब जब तक मुझे बताइए क्या आप भी LED का यूज करते हैं? अभी आपने देखा होगा हर जगह LED पैनल्स आपको दिखाई देंगे, राइट? इनफैक्ट हम लोग LED डिस्प्ले भी यूज करते हैं क्योंकि इसकी एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है, राइट? तो चलिए अब चलते हैं रूम में, वहां हम लोग डिस्कस करेंगे कि ब्रिज रेक्टिफायर कैसे काम करता है और इंटरनल कंपोनेंट्स कैसे काम करते हैं और LED का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है. Now we have seen different types of LED. 9 watt LED, then what 50 watt LED for indoor,
50 watt LED for outdoor unit, and what, one table lamp. And we can control the brightness of these LEDs as well as we can control the color of these LEDs. Now this is time to understand the internal circuit diagram of what LED and important components. Now that was the journey from this to LED. Okay guys, now first of all DC is required, right? And we have to convert AC signal into what, DC. So that is the block diagram for that. First we are using the transformer. In some circuit we are designing without transformer, okay, then we are using capacitor to decrease the value of current. Okay, now after that we are having this sinusoidal signal, it is bidirectional. Then rectifiers. In LED driver we are using bridge rectifier, that is a full wave rectifier. With the help of rectifier we can convert bidirectional waveform into unidirectional waveform. Now the DC of this is 0, it has DC plus what, AC, and that is called pulsating DC. Now after that it is passed through the filter. We are having the different types of filter: C filter, L filter, that is also known as choke filter, L section filter or LC filter, pi filter or CLC filter. Normally we are using C filter, okay, or LC filter, that is L section. So this is a filter. What is the purpose of this filter? It will minimize the AC component. After filter you will get this type of waveform. Again we are having some ripples. Then at the last end we are using voltage regulator, and we are getting the regulated voltage here, almost constant DC, and that constant DC is given to load. So that is the basic diagram through which we can convert AC signal into DC signal. Now we will discuss bridge rectifier here. First of all, this is a half wave rectifier guys. Here we are using the transformer, one diode is connected. Diode is a unidirectional device. In one direction it will allow the current, in other direction it will stop the current. Now from this we are getting the half wave like this. Okay, but the DC here we are getting only Vm by pi. Okay, and what about the ripple frequency? It is only F, and that's why when we are using the capacitor filter, it will minimize AC component but not so effective. That's why we are using full wave rectifier. This is a bridge rectifier. Okay, so here we are giving input without any transformer. Yes, now this is a bridge rectifier. We are using 4 diodes, D1, D2, D3, D4, and across RL we are getting unidirectional output. It is a full wave. Now what is the working of the full this is the full wave rectifier or bridge rectifier. Now when we are giving the positive half, that is greater than 0, there are 4 diodes. Out of these 4 diodes, D1 and watch this, this is the D1 and D2, these are on. And what about the D3 and D4? Off. And that's why we are getting current in this direction, and this battery will supply the current. So that is the direction, right? And through RL from right to left. Then in second case, okay, give me 1 minute. Okay, in second case, when we enter into the negative half, D1 off, initially it was on, D2 off, D3 on, D4 on. Then when these 2 diodes are on, what will be the direction of the current? Because it is negative half, this is the direction of current through the D3.
through RL, through the D4 and this one. What is the direction through the RL? From right side to left side. Means what about the current? It is unidirectional, whether it is positive half or negative half. Then if this is the input, we are getting this type of output, unidirectional output. This is the direction of the current, unidirectional current. What is the average value of this? 2 Vm by pi. And when we are passing through the filter, what is the ripple filter frequency? That is 2f. This is called ripple frequency. And because it is high, and that's why the filter will work properly, right? It depends upon the frequency of the ripple signal. It is double when we are comparing with the half wave rectifier. Then here we are using bridge rectifier with capacitor filter. So I have shown you the internal diagram of LED driver, where we have used what? One bridge rectifier and with what? Capacitor filter. So that is the internal diagram of that circuit, guys. Now this is the LED. What is the function of LED? Just it will convert the energy into what? Light. So what is the basic function of LED? Remember, it is a PN junction, that is light emitting diode, and it works when the diode is forward bias, right? Means diode will allow the current in forward direction. Now when current move in forward direction, electron will switch from conduction band to valence band, and it will recombine with the hole, and it will give the light, or sorry, in the energy in the form of light, right? This is conduction band and that is what? Valence band. And it is possible in case of direct band gap semiconductor. Silicon and germanium are what? Indirect band gap semiconductor. Gallium arsenide is a direct band gap semiconductor. So we are getting energy in the form of light, right? So this is a forward bias PN junction, LED, light emitting diode. And this is a very, very important factor for LED, that is called external quantum efficiency. This external quantum efficiency is defined as internal radiative efficiency into what? Extraction efficiency. This is the product of these two. So we can get one numerical on this formula. So please read this formula and make short notes on this formula. So that is about the LED, guys. Remember, this is a very, very, very important component, right? And no doubt it is also important for our competitive exams like GATE, Engineering Services, ISRO, DRDO, BARC, HAL, HPCL. Thank you. You are on Byju's exam prep. Subscribe our channel, like the session. Thank you.